Hi guys, my name is Isha. Welcome back to the channel. Since CMAT results have been out, a lot of you are confused कि कौन से colleges apply करनी है and which colleges to not apply to. We have received a lot of questions regarding VBS in general. So we are going to make this video about VBS. इनकी placements कैसी है, इनकी faculty कैसी है, general overview whether you should apply or not. So if you're looking into VBS as an option, stay tuned. लेट्स स्टार्ट विद देयर प्लेसमेंट्स। ये इनकी वेबसाइट है जहाँ पे प्लेसमेंट हाइलाइट्स में मेंशन करा है कि देयर एवरेज सीटीसी इज 8 लाख पर एनम, decent. Highest international CTC has touched 21.42 lakh per annum. As per the talks that we've had in from the previous students, हमें पता चला है कि international placements होती है दुबई में, ओमान, साउथ अफ्रीका, गल्फ एक्सेट्रा. So इनकी international placements are decent. Highest domestic CTC has crossed 12 lakh per annum, which is again a decent number. When we talk about companies that came onto campus, it was ICICI Bank, ITC, Deloitte, Amazon, etc. In fact, ICICI Bank ने similar roles जिसमें वेलिंकर और केजसोमाया को 10 to 12 लाख ऑफर किए हैं, वही सेम रोल के लिए VPS में 8.5 lakh ऑफर हुए, which is great, which means VBS is doing great in placements and there is nothing wrong with it. If we talk about their fees, तो इनकी fees ज़्यादा expensive नहीं है. The figure that we're looking at is 8.80 lakhs. And if we even calculate the ROI based on average CTC, which is 8 lakh per annum, तो ROI 100% हो रखा है, which is a great deal. Some other things which is worth mentioning is that ये लोग थोड़े सर्टिफिकेशंस आपको फ्री में प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि SHRM सर्टिफिकेशन, विच इज़ द नंबर वन सर्टिफिकेशन इन HR. जैसे CFA इज फॉर फाइनेंस, वैसे SHRM इज फॉर HR. दिस कोर्स अगर हम बाहर से करने जाए इसको, तो इट कॉस्ट अराउंड 1.5 लाख रुपीज, बट VBS इसको हमें टोटली फ्री में दे रहा है. एंड देन वी कैन ऑल्सो कंसिडर दैट यू विल अर्न सम स्टाइपेंड इन द समर इंटर्नशिप पीरियड. तो ये सब अगर हम कैलकुलेट कर ले तो योर फीस ड्रॉप डाउन टू अराउंड 6 लाख एंड आपका ROI और बढ़ जाता है. In fact, in an interview that Ketan sir has took, one of the VBS previous students have earned 1 lakh stipend in her summer internships, which is again a great deal. Let's talk about the faculty यहाँ पे. It is undoubtedly great. केतन सर का एक इंटरव्यू भी है फैकल्टी के साथ VBS की, जो एक IIM Bangalore alumni है and is currently pursuing PhD from Symbiosis. Their faculty for finance is also people who have worked with RBI and other namely financial institutions in India and abroad. तो फैकल्टी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है. इट इज टॉप नॉच एंड यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. VBS इज ऑल्सो लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द सिटी, जो चेंबूर में है, तो लोकेशन प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी नहीं है. कैंपस बहुत वाइब्रेंट है, डायनामिक है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो ग्रेट. If I have to give a final verdict on this, I'll say that VBS is definitely a decent option for you if you have got a CMAT score of 70 percentile and above. Great faculty, decent ROI, campus भी अच्छा है, location भी अच्छा है, everything is sorted. But हाँ, you cannot go into VBS and then expect a 30 or 40 lakh per annum का package. नहीं, decent ROI मिल जाएगा, decent placements भी मिल जाएंगी. You have to go inside, give your 100% efforts, मेहनत करनी है, and then you will get a good placement, good company to work under. Also, if you before you move ahead, we always suggest that you do your own due diligence, talk to the alumni, get to know about VBS a little more, and then take your decision as to apply करना है कि नहीं. If you have any further questions, you're free to comment them down below, and we will ensure that we reply to them all. Thank you and all the best.